Hi all, a very good morning. Welcome to ILT Academy. So let us start today's class. Yeah, देखो माँ. See, already we know what is simple interest, what is compound interest. उसमें थोड़ा present value and compound interest का और थोड़े sums करेंगे अभी, ठीक है ना? बस क्लियर एक बार रिवाइज कर देता हूँ. जस्ट बेसिक सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूलाज मालूम मैंने आपको. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहता है? प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइड बाय व्हाट 100. अमाउंट इज इक्वल टू नथिंग बट व्हाट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. कमिंग टू द कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या रहता? पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर एन. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सेम. एनी कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. यहाँ पे भी सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट व्हाट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. कंपाउंड इंटरेस्ट में ऑलवेज यू ट्राई टू कैलकुलेट अमाउंट, फिर जाके कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करो. क्लियर, इजी हो जाता. कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ठीक है. नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, ये जो है ना लाइक कंपाउंडिंग बोल के बोलते. कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, कंपाउंडिंग मंथली, compounding quarterly. So in this case what I told, same amount formula. What is that? P into 1 plus R by 100 whole power n. But compounding factor को क्या करना चाहिए? You are going to multiply with what? N. And you are going to multiply with what? 100. Compounding factor is multiplied with what? N and 100. Clear? Now what is compounding factor in the case of semi-annually? Semi-annually में compounding factor क्या रहता? 2 रहता. हाँ, मंथली में क्या रहता? 12 रहता. क्वार्टरली में कितना रहता? 4 रहता. क्लियर? अंडरस्टैंड? डिड नॉट अंडरस्टैंड? बाई मंथली बोल के भी एक रहता. बाई मंथली में 6 रहता कंपाउंडिंग फैक्टर. गॉट इट? डिड नॉट अंडरस्टैंड? हर समझ में आया नहीं आया? क्या डन ना? बर्थडे किसका? हाँ, ऑलरेडी नहीं आए थे ना कल, इसलिए पूरा बैच बैच नहीं आए. कहाँ गए? वेरी गुड. अब देखो, अब देखो ना, सिंपल. फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पेमेंट 8400 टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. नाउ ये ईयर 1 है समझो. क्लियर? यू हैव डिपॉजिटेड सम प्रिंसिपल अमाउंट. ठीक है. नाउ you are going to receive principal plus interest, that is amount. Clear? After 1 year how much you are going to receive? 8400. And what is the rate of interest? 20%. 20% क्या बोल के बोल रहे? compound interest. So amount formula is nothing but P into 1 plus R by 100 whole power n. Amount how much you are receiving? 8400. Principal is how much? Don't know. 1 plus rate कितना है? 20 by 100 टाइम 1 ईयर ओनली. क्लियर? सो ये कितना हो जाता है? 8400 इज इक्वल टू पी इंटू 120 डिवाइड बाई 100. सो पी इज इक्वल टू व्हाट? 8400 इंटू 100 डिवाइड बाई 120. 0 0 कैंसिल. 12 1 7. 700 इंटू 10 कितना हो जाता? 7000. एनी डाउट्स? क्लियर? सो if you deposit 7000 you are going to get what? 8400. so 8400 is nothing but what? future value समझ सकते हैं. 7000 is nothing but what? present value समझ सकते हैं. That's it.
Clear? 8400 is future value for present 7000. That's it. Clear? ये first part समझ में आया? Now 8640 to be received at the end of second year. Second year same to same, principal plus interest, वो कितना बन गया 8640. Clear? So this is nothing but amount, same formula, A is equal to P into 1 plus R by 100 whole power n. अमाउंट कितना आएगा आपको 8640. प्रिंसिपल यू डोंट नो, 1 प्लस 20 बाई 100, पावर कितना है 2 years. क्लियर? सो 8640 इज इक्वल टू P इंटू 100 प्लस 20 कितना रहता 120 डिवाइड बाई 100 तो 120 डिवाइड बाई 100. क्लियर? 0 0 यहाँ ही कैंसिल कर लो, इजी हो जाता. सो उस साइड लेके गया तो 8640 इंटू 10 divided by 12 into 10 divided by 12. Clear? Got it? So 12 टेबल में ये कितने बार जाता 12 7 जा 84 72 720 हो गया, 12 1 जा 60 हो गया. 60 into 10 is what 600. 600 10 जा 6000. Clear? So if you want me to show, दिखाता हूँ 6000 का 20% इंटरेस्ट कितना रहता 1200. 600 कितना हो गया 1200 हो गया. सो 7200 बन गया. फिर इसके ऊपर 20% बोले तो कितना 720 14 40, टोटल कितना हो गया 8640. एनी डाउट्स? सो पहले प्रेजेंट वैल्यू कितना था 6000. दैट इज द थिंग. एनी डाउट्स? समझ में आया क्लियरली? डिड नॉट अंडरस्टैंड? यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन? ये पार्ट समझ में आया? प्लीज नोट डाउन. गॉट इट नोमा? नहीं ये नहीं होना, पूरा नहीं होना. इतना इंट्रोडक्शन नहीं दे, सम नहीं करे ना. नहीं रे, यहाँ तक टिकते हैं 7 8 क्वेश्चन तक कर लिए, 9 से करना है ना. समझ में आया 8? गॉट इट? भावेश ये देखो 9th वाला क्वेश्चन. A man borrowed 35,000 at a rate of 15% per annum compound interest being compounded annually. How much amount should he have repaid at the end of first year? If by repaying 19,837.5 at the end of second year, he can clear the loan. यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आया आपको? So let us make in a diagram format, then you will understand. ये देखो, a man borrowed how much 35,000. A man borrowed 35,000 at the rate of how much 15%. Clear? Compound interest game. So interest being what compounded annually. How much amount should he have repaid at the end of first year? First year he paid x rupees. Clear? कुछ अमाउंट बच गया, फिर उसके ऊपर फिर से कितना हो जाता एट द रेट ऑफ 15% कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट? क्लियर? नाउ एट द सेकेंड ईयर ही रीपेड हाउ मच 19,837.5. क्लियर? यू आर अंडरस्टैंडिंग? दे आर आस्किंग हाउ मच ही रीपेड. ही रीपेड y समझ लो, ठीक है? 35,000 माइनस y इज नथिंग बट व्हाट x. क्लियर? he repaid y after first year. 35,000 minus y is x रुपीस बच गया. नाउ x के ऊपर हम क्या करेंगे 15% इंटरेस्ट ऐड करके 19,837.5. सो सिंपल, पहले ये ना को सॉल्व करो, सॉल्व फ्रॉम एंड. सो आई कैन टेल दैट x plus 15% of x that year interest is nothing but what the leftover payment 19,837.5. so from this you will get what x plus 0.15x is equal to 19,837.5. So 1.15x is equal to 19,837.5.
0.5 divided by what? 1.15. Any doubts? What is the value? 115 से divide करें तो 115, 15 ones are 1937.5 divided by 1.15, 17,000, 17,250 हो गया. Clear? Leftover amount. Can you tell me what is y? हाँ, सब लोग क्या बोले? 17,250. That is wrong. See, voluntarily I did. आपका thinking जो है ना, ऐसा ही सोचेंगे आप. See, almost everything is correct. But यहाँ एक point miss कर लिया. See, 35,000 principal amount था. First year interest का आ गया. वो भी पे करना है उसको, right? So इसको correct करो. This will be 35,000 plus interest amount कितना हो जाता है? 35,000 का 15%. 350 into 15 is nothing but 3,500 plus 1,750. 5,250. 5250. So total due कितना हो जाएगा? 40,250. Now pending is only 17,250. So he repaid minus 17,250, which is nothing but what? 0 0 0 आ गया, 23,000 हो गया. So he repaid how much? Check करो total. Correct है ना? Understood? Did not understand? Clear? 23,000. So आपका ऑप्शन जो 17,250 रहता ना, वो रहेगा ऑप्शन में, बट वो गलत हो जाएगा. 23,000 इज आंसर. Clear? Understood? Did not understand? समझ में आया क्वेश्चन? सी, ही टुक अ लोन ऑफ 35,000. सो 1 ईयर में क्या होगा? इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा. 35,000 प्लस इंटरेस्ट हाउ मच? 5,250. सो टोटल ड्यू इज व्हाट? 40,250. इन दैट ही पेड सम वाई वैल्यू. सो लेफ्ट ओवर इज व्हाट? एक्स. एक्स के ऊपर फिर से 15% इंटरेस्ट ऐड कर दिए तो 19,837.5 हो गया. क्लियर? गॉट इट? डिड नॉट अंडरस्टैंड? आया समझ में? दीपक, हेलो 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 हेलो. ये देखो, सी हियर टिल 9th. एनी डाउट्स? अब 10th क्वेश्चन देखो.
A man borrowed 80,000 at a rate of 10% per annum compound interest. Interest being what? Compounded annually. How much amount should he have repaid at the end of first year if by repaying 55,000 at the end of second year he can clear the loan? Same concept. Did you understood? Can we do this? Same like last sum. Try karo. Only the amount digits are different. Okay, and percentages are different. So we can do this. Clear no ma? Any doubts? Hello. Hello. 38,000 आया. देखो ma, you got 38,000. Let me check this. So how much was the loan taken? 80,000, right? And at the rate of what? 10% per annum compound interest. So at the rate of 10% interest कितना हो जाएगा? 8,000. So total value is how much? 88,000. So year 1 में इतना total था. इसमें कुछ repayment कर दिए -y. कितना बचा? x. Now x again, what is the rate of interest? 10% per annum at the rate of 10%. Clear? So x का 10% कितना हो जाएगा? 0.1x. And total repayment was how much at the second year? 55,000. So x plus 0.1x is equal to what? 55,000. Clear? So 1.1x is equal to 55,000. X is equal to 55,000 divided by what? 1.1, which is what? 50,000. So x value 50,000 means y value will be what? 38,000. Any doubts? Did not understand. Clear ma? Right? Ha, 11th wala question. See, if anyone did not write, please note down this. 10th one. Clear, right? Eleventh वाला देखो. 3 equal installments of rupees 1,000 each discharged a sum borrowed at 20% per annum compound interest annually. Find the sum borrowed. Two minutes time to do this sum.
only, but how, see the concept, let us understand. अब एक मेथड बताता हूँ. Clear? We don't know how much is loan. Loan is what? Question mark. But we know what? Three things. One is year one में repayment. Next one is year two में भी कुछ repayment हुआ. Next year three में भी कुछ repayment हुआ. How much was the repayment? 1000. Huh? हाँ 1000. Clear? And we know that there is interest at the rate of 20%. इसमें भी interest है at the rate of 20% for 2 years. इसमें भी interest है at the rate of 20% for how many years? 3 years. So simple, P into 1 plus R by 100 whole power n. Amount हो गया ये. This consists of principal and interest, right? So this is nothing but amount 1000 है. So P into 1 plus rate of interest कितना है? 20 by 100 whole power 1 डाला 1 year का, कितना हो गया? 1000 समझ लो. So P into 120 divided by 100. इसमें कुछ डाउट है क्या? 100 plus 20 is 120. 120 divided by 100 is equal to what? 1000. So P is equal to what? 1000 into 100 divided by what? 120. So 0 0 cancel. 10 by 12. So 10,000 divided by 12 करो. Use your calculators, not an issue. 10,000 divided by 12 is what? हाँ no problem. 833.33. Clear? Okay? एक सम पूरा फुल फ्लेड्जेड लिख करते. नेक्स्ट शॉर्टकट वे में भी कर सकते. नेक्स्ट ये 1000 है. यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट 1 प्लस 20/100 कितना पावर 2, क्योंकि 2 ईयर्स है ना, 2 ईयर्स के बाद में रिपेमेंट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट भी 2 ईयर्स करेगा इसमें. इज इक्वल टू 1000. सो पी इज नथिंग बट व्हाट 1000 इनटू शॉर्टकट में 100/120 ये होता ना, उस साइड गया तो 120/100 इनटू, सो 2 टाइम्स 100/120 इनटू 100 डिवाइडेड बाय व्हाट 120. क्लियर? और बोलना बोले तो 0 0 भी कैंसिल. सो ये कितना हो जाता? 1000 into 10 divided by what? 144. So 1 lakh divided by 144. $694.44. Next, same way, P into 1 plus 20/100 whole cube is equal to how much? 1000. So P is equal to what? 1000 into 10 by 12 into 10 by 12 into 10 by 12. ये कितना हो गया? 578.7. Now add A, add B, add C. Total loan आ जाता 2106.48 आया ना. 833.3 plus 694 plus 578.7. 2106 वही है ना. 2106.48. Any doubts? Did not understand? Is it clear? समझ में आया? ये दोनों सेम क्वेश्चन ही है 12th वाला. राइट ऑन राइट ऑन. नहीं नहीं आया तो बोलो, मैं समझाता हूँ फिर से. नो नीड टू वरी अबाउट दैट. अंडरस्टूड नो?
शिवा यहाँ तक तो आ गया ना? एनी डाउट्स? Turn off this fan once. Clear till here? ये देखो 2106.48 यहाँ तक तो हो गया. Now a man took a loan of how much? 13 month. देखो 12th क्वेश्चन सेम टू सेम है. 3 equal installments of 100 rupees each. Discharge the sum borrowed at 20% compound interest compounded annually. Find the sum borrowed. कितना है? 2106.48. Clear? Now 13th question. A man took a loan of how much? 1 lakh at 8% per annum compound interest. He repays how much? 10,000 per annum. What is the amount due from him at the beginning of the third year? समझ में आया? बेसिक क्वेश्चन है. सो सेम टू सेम टाइमलाइन बना दो. सर आप करते हैं. हाँ ये कर सकते हैं. आगे वाला कर. Man took a loan of how much? 1 lakh. Right? 8% per annum compound interest. So at the rate of 8%, interest कितना हो जाएगा? 1 lakh का 8% कितना है? 8,000. So 108,000 is the due amount at the end of first year. He repays how much? 10,000 per annum. So minus 10,000 कर लो. 98,000. Second same way at the rate of again 8%. 98,000 का 8% कितना हो जाता? 7840. ये 7840 हो गया इंटरेस्ट. फिर से सेम प्लस 7840 कितना हो जाता टोटल ड्यू? 98,000 plus 7840 105,840. Right? Again what was the repayment? 10,000. So 95,840. Again same way at the rate of 8%. So 95,840 का 8% करो. 7,667. 7,667. 93,507 answer. 95,840 plus 7,667 minus 10,000. ये कितना हो जाता है? 85,840. 85, 92, 92, 840, 93. हाँ 93, 507. Can you do which option? Option ही नहीं है. At the beginning of third year only they asked. At the beginning of 95,840. यहाँ पर ही आ गया हमारा आंसर. At the end of third year पूछे तो वो करेंगे. Clear? ये हो गया end of the year. Question में beginning ही पूछा. Any doubts? समझ में आया आपको? Clear? Did you understand ma? What did I do? Simple. 1 lakh 8% interest. 108,000 हो गया. 10,000 repayment. 98,000. Same उसके ऊपर 8% interest. 98,000 का 8% 7,840. So फिर से add हो गया 105,840 minus 10,000 95,840. Clear right? Any doubts? Perfect. Here. Thirteenth आ गया ना? फोर्टीन का देखो. Anil borrows rupees 2 lakhs at an interest rate of 8% per annum. Compounded what? Half yearly. So he repays rupees 10,320 at the end of first year and closes the loan by what? By paying the outstanding amount at the end of third year. Then the total interest in rupees paid over the 3 years is nearest to 2. Want to try this? Yes, sir. Okay, 2 minutes time I will give. You can try.
तो चैट ऑफ कर देता हूँ। 2 मिनट टाइम लो, पहले तो करो। कोडिंग बनाना सर। धनमा आया नहीं आया? नहीं आया। ठीक सर रुको सर। सर ऑप्शन सी है सर आंसर। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है। कुल हाँ डोंट वरी। चेयर आ रही है। देखो सी, अभी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सी लास्ट टाइम कैसा था, 2 लाख दिया था, 8% बोले तो डायरेक्टली ऐड माइनस करेगा। सी अब जब भी क्वेश्चन में कंपाउंडिंग आ गया समझो, कंपाउंडिंग कैसा है, हाफ ईयरली। व्हाट इज द कंपाउंडिंग फैक्टर? 2 सर। 2, राइट? सो
2 बोले तो रेट कितना है यहाँ 8%, तो उसको डिवाइड कर 4 हो जाता, 4 कर सकते हैं आप, 1 के क्लियर। एंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हो गया ना, वो 2 इयर्स का, 2 इयर्स का इंटरवल के जैसा। सो व्हाट यू वांट टू टेल सर, मेरे को समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ। सी फर्स्ट लोन वैल्यू कितना था 2 लाख, राइट। नाउ कंपाउंडिंग क्या हो रहा, आधा आधा साल में हो, क्लियर। सो 2 लाख व्हाट यू कैन डू, प्लस 4% कर दो, कितना 208,000, क्लियर। सो जनरली ये 4% कैसे आया सर बोले तो 2 लाख इंटू 8% करेंगे हम इंटू 6/12 विच इज नथिंग बट 1/2, राइट। सो 4 ही हो जाता। सो इंस्टेड दैट डायरेक्ट 208,000, फिर रीपेमेंट यहाँ हो रहा क्या 6 मंथ्स को, नहीं 1 ईयर को हो रहा। सो फिर से क्या एट द रेट ऑफ 4% ऐड कर दो, 208,000 प्लस 4% इज हाउ मच ऑन दिस 208, 2080, 8,000, 8,320, राइट। सो 216,320 हो गया, क्लियर। इसमें रीपेमेंट कितना हो गया, ही रीपेज द लोन 10,320 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर माइनस 10,320, सो कितना बचा 206,320, राइट, क्लियर। एनी डाउट्स, 206,000 नॉट 320, क्लियर। Anil borrows 2 lakhs at 8% per annum, compounded half yearly. He repays 10,320 at the end of first year and closes the loan by paying outstanding amount at the end of third year. The total interest in rupees paid over the 3 years is nearest to 2. यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है, ये 8,000, यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है 8,320। नाउ अभी कितने तक करना है हमें, अप टू 3 years, 3 years को क्लोज कर रहा, हाँ आगे, हाँ वेरी गुड। सो 206,000 का 4% कितना है, सेकंड ईयर का 16,800। यहाँ और एक चीज भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर अमाउंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 होल पावर n, राइट। सो प्रिंसिपल कितना है अभी इस पॉइंट पर 206,000, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था जनरली, बट हम क्या कर दिए उसको आधा कर दिए 4/100 एंड 2 इयर्स को हम कितना ले रहे 4 टाइम्स हो गया, बोलिए कंपाउंडिंग फैक्टर सेम, डिवाइड बाय 2 एंड इनटू 2, 8 ले तो वैसा। सो यहाँ पर कितना आ जाता अमाउंट 206,000 इंटू 104/100 पावर 4, 104 डिवाइड बाय 100 इंटू 104 डिवाइड बाय 100 इंटू 104 डिवाइड बाय 100 इंटू 104 डिवाइड बाय 100। इसका टोटल बता सकते हैं क्या मेरे को, 1.1 टोटल 2060 इंटू 104 इंटू 104 इंटू 104 इंटू 104 डिवाइड बाय 2060 इंटू 104 टोटल डिवाइड बाय ये भी करो ना, और एल्स 2060 इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04। सर फर्स्ट ईयर का 16,320 आया, सेकंड ईयर का 16,809.6 आया, थर्ड इतना करने की जरूरत नहीं है, ये टोटल बताओ मेरे को 2,409. अरे ये एक 104 रहता, सॉरी एक 1.04 नहीं रहता, एक 104 इंटू 100 करो, आपका आंसर जो आया। मैं भी पहले वही बोली सर, हाँ कितना 2,40,000, हाँ 2,40,990.86. 90.86 240,90.86, ओके। सो टोटल यहाँ तक अमाउंट कितना हो गया 240,990.86, राइट। माइनस 206,000 करो, इंटरेस्ट अमाउंट आ जाता है यहाँ 240,990.86 माइनस 206,000, so how much you will get 33,010.86 एंड यहाँ पर कितना है 16,320, 33 ओनली नो, 33 आ रहा, 34 आ रहा,
34,990 आता, सॉरी 34,990.86 and 16,320. 51,310.86. 51,310.86. 51,300. आ गया? समझ में नहीं आया? अंडरस्टूड? नेक्स्ट. हाँ लिखो. What are you doing, Ray? लिखा. These people लिखो लिखो पहले लिखो फिर बाद में ट्रांसलेट करो. हाँ राइट साइड देयर पागल हो गए. कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई पर करोगे, फोकस करो. अरे पागल. चैट पे निकाल देता हूँ. यहाँ तक हो गया. Any doubts now? 14 now? 15 देखो. He now borrows 45,000 from a bank at 10% compound interest. She repays in 3 annual installments that are in arithmetic progression. If she ends up by paying 54,000 in total, how much did she pay at the end of first year? आया समझ में? AP में है यहाँ. ये सुन के ही रोना आ रहा क्या? ऐसा इजी है. हाँ AP इजी लगता. करो सम करने के बाद इजी होता. Look, he now borrows rupees 45,000 from a bank at 10% compound interest. She repays it in 3 annual installments that are in arithmetic progression. If she ends up by paying out 54,000 in total, how much did she pay at the end of first year is the question. Close that tray. अरे ये सम हो गया. फोकस करो.
I send the same screenshot to your parents. देखो Ina borrows 45,000 from a bank at 10% compound interest. She repays it in 3 annual installments that are in AP. If she ends up paying 54,000 in total, how much did she pay at the end of first year? 2 minute time लो करो. सर ऑप्शन डी सर. पागल हो क्या? नहीं है, wrong है. अरे इतना सोचने का क्या है इसमें? बेसिक चीज तो है. सर ऑप्शन सी सर. रॉन्ग है. सी भी रॉन्ग है. डी भी रॉन्ग है. यस. ए ए कौन बोले? रॉन्ग है वो. बी. अरे इतना सोच रहे आप? सी फर्स्ट थिंग. Hina borrowed how much loan? 45. Hina borrowed 45,000 and she repaid how much? Installment 1, installment 2, installment 3. Right? These 3 are in what? AP. So can I take this as A minus D? Can I take this as A? Can I take this as A plus D? Any doubts? ये तीनों ऐड करें तो कितना है? 3 नहीं है, 54,000 दे दिए ना रे. 54,000. So D cancel. 3A is equal to what? 54,000. So A is equal to what? 54,000 divided by what? 3, which is 18,000. So from this I got to know that what installment 2 is 18,000. But question आता है कि installment 1 कितना है? Installment 3 कितना है? So what is the rate? Compound interest कितना है? 10%. So इसको 10% ऐड नहीं कर सकते. इसको 10% भी ऐड नहीं कर सकते. So how to do this? सर आपके 7 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए सर. How much did she pay at the end of first year is the question. First year में क्या है repayment? Focus थोड़ा ट्राई करो, आ जाता. मैं आपको क्या बताया यहाँ? 45,000, राइट? प्रेजेंट वैल्यू. अभी लोन कितना लिए? 45,000 एंड first repayment was what? 18,000 minus D, installment 1. Clear? So 18,000 minus D divided by 1.1 plus 18,000 divided by 1.1 whole square plus 18,000 divided by 18,000 plus D divided by 1.1 whole cube is equal to 45,000. Any doubts? 1.1 10% है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट. 1 plus 10% कितना होता है? 1.1. लास्ट टाइम करे देखो 3. हाँ 18,000 minus D ये बताना. 18,000 minus D divided by 1.1 ले लो is the amount we have repaid. Clear? प्रिंसिपल आ जाता. पर ना करने के
सर पार्टनरशिप के भी वीडियोस आ रहे हैं सर यूट्यूब पे। कभी डाला था क्यों? ये देखो पहले best friend. What are you doing? Stop the turn. Some ये देख this is I1, this is I2, and this is what? I3. Installment 1 plus installment 2 plus installment 3. Clear?